Audio Jungle. 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 अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। आज मैं पूछना चाहूँगी, आज हमारा 5th एनुअल डिनर है गुल ऑफ चेम्बर्स का, इसके बारे में खलील साहब आज आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू गुल साहब के इस फंक्शन को मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये बड़ी अच्छी खुशआइंद बात है कि ये हर साल माशाल्लाह ये एनुअल डिनर करते हैं और समहाउ आई एम पार्ट ऑफ इट और मेरी दिली विशेष जो है उनके साथ हैं कि ये ऐसा ही फंक्शन करवाते हैं। और इस वक्त हमारे साथ हैं शबीर असलम जो मेयर ऑफ लेस्टर हैं। आइए चल के उनसे पूछते हैं कि वो आज के बारे में क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका और मैं इस मौके पर रियाज को मुबारकबाद देना चाहूँगा उनके 5वें एनुअल डिनर पर। माशाल्लाह उनकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है इसमें लॉ चैम्बर में और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उन्हें और कामयाबी दे और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें और इसी तरह अपनी कम्युनिटी की खिदमत करते रहें। अब हमारे साथ हैं एहसान शाहिद और चलिए उनकी तरफ जाकर देखते हैं और देखते हैं कि वो आज हमें क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बहुत खुशी हो रही है। रियाज गुल साहब को बहुत सारी मुबारकबाद है इस बात की कि हक और सबकी आवाज़ के साथ उन्होंने बेस से शुरू किया था और आज उनकी जो इंट्रोडक्शन है उनका तारफ़ है पूरे मुल्क में है बल्कि पूरी दुनिया में है। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए स्पेशली एक बहुत बात है कि ग्राउंड रूट से जो आदमी ने काम शुरू किया और आज उसको मेहनत का फल मिल रहा है और उसको बहुत पजीर आई है। और इस वक्त हमारे साथ निसार मलिक साहब हैं जो इलेक्टेड मेयर ऑफ हाउंसलो होने वाले हैं और मैं उनकी तरफ चलूँगी। इंशाल्लाह मई में इलेक्शंस होंगे तो आप सबसे भी दरख्वास्त है कि इलेक्शंस में इनको ही जिताना है, लेकिन उससे पहले इनकी तरफ चल के और इनसे आज के तासुरात मैं पूछना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी करेक्शन है कि मेरा जो मेयर बनना है वो सिर्फ लेबर पार्टी के जो काउंसलर हैं वो वोट डालते हैं। पब्लिक में सिर्फ जो मई में हो रहा है वो इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन फॉर द पार्लियामेंट। I am actually already been selected within my Labour group to be a mayor from 2015 to 2016 and it is an honour and it is a pleasure to be voted in by my fellow councillors
and inshallah I'll be taking over on the 26th of May 2015. इस वक्त हमारे साथ हैं तहमीना, जो पार्ट ऑफ लॉ ऑफ चेम्बर्स हैं, और चल के इनसे बात करके पूछते हैं कि वो इनके साथ जुड़कर या आज का इवेंट कैसा एंजॉय कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम तहमीना। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी फ़र्म के बारे में कुछ कह सकूँ। एक्चुअली मैं पिछले 3 साल से इस फर्म के लिए काम कर रही हूँ, एंड इट्स बीन ऑनर टू वर्क विद मिस्टर रियाज गुल। वो इतने अच्छे इंसान हैं, मैं उनके लिए इतना ही कहूँगी कि ये वो इंसान है जिससे जब मेरा पहली बार इंटरव्यू हुआ था, ही सेड के उनकी कुर्सी उनका जानेमाज है और उनका काम उनकी इबादत। तो मेरे ख्याल में जो इंसान किसी बात को इतने खूबसूरत लफ्ज़ों में अपने काम को इबादत समझे, तो आप सोचिए उस इंसान के साथ काम करते हुए आपको कैसा फील होगा। सो इट्स रियली बीन ऑनर्ड, एंड दिस इज़ माई थर्ड फंक्शन। मैं इनके साथ ये तीसरी ये 3 साल से आप मुंसलिक हैं, और मैं 3 साल से ये मेरा थर्ड पार्टी है जो मैं अटेंड कर रही हूँ, और होप आप सब भी इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। सो फ्रॉम माय साइड गुड विशेस, बेस्ट विशेस फॉर एवरीवन। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, दैट वाज तहमीना, थैंक्स अ लॉट। और इस वक्त अब चल के बात करेंगे हम शाहिदा जी, जो काउंसलर ऑफ हाउंसलो हैं। शाहिदा जी अस्सलाम वालेकुम, और आज के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप क्या कहना चाहेंगे। पहले तो बात है वालेकुम सलाम, मेरा नाम है शाहिदा मेहरबान, काउंसलर ऑफ हाउंसलो साउथ। We've been invited here today by Riaz Gul. He is a wonderful solicitor, and we have been to many of his parties before, and I hope that his business in helping those people who need that extra bit of help legally, I hope that his business goes from strength to strength. He is a lovely man. We've met him on many occasions, and he's doing really well. He's not just in it for the money, but he's genuinely a very caring man. और अब हमारे साथ हैं शाहिद यूनुस साहब, और इनसे अब मैं चल के पूछना चाहूँगी कि आज का इवेंट वो कैसे एंजॉय कर रहे हैं, और उनका ताल्लुक रेडिंग से है। वोकियम का एक इलाका है वहाँ पे नज़दीकी रेडिंग में, सो उनके ये काउंसलर हैं, तो उनसे मैं पूछना चाहूँगी कि प्लीज़ आज के इवेंट के बारे में कुछ कहिए, या गुल लॉ चेम्बर्स की फ़र्म के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप। पहली बात तो सबसे पहले तो रियाज भाई का जो गुल चेम्बर्स, उनका बहुत मशहूर हूँ कि उन्हें मुझे बुलाया, और आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। माशाल्लाह पिछले 3 साल से मैं आ रहा हूँ फंक्शन में, और देख रहा हूँ कि दिन ब दिन माशाल्लाह जो चैम्बर है वो तरक्की कर रहा है, और दिली तौर से बहुत इसकी खुशी होती है, और दुआएं भी हैं अल्लाह ताला और तरक्की दे। Well, now we have Seema Malhotra, our future MP from Hounslow. In fact, Seema, I belong from Hounslow as well, so I think need to ask her what she got to do say about today. So आपसे I would like to request you to say a few words about Law of Chambers today, and what you think about today's event. Well, firstly, it is a pleasure to be here as the MP for Feltham and Heston, and also re-standing now in the elections, and really to congratulate Riaz Gul and the Chambers on the work they do in our community, because we know that the contribution that is made through all of the professions, particularly by the Muslim community, really enriches our local area. It also means that there is trust when those services are there. People feel they are understood, people who are like them. And fully I believe that representation is vital in all our professions, including in politics. That's how we make sure that the needs of the community are met. So for Riaz Gul and the Chambers and his family, for all to be putting on this event today, is a recognition not just of how it's important to do business in the community, but it's important to take part in the well-being and the welfare of the community. This is a night to be able to gather together, to have those who are counsellors, those who are customers, those who are members of the family come together. It enriches our lives, enriches our relationships, and I congratulate them. It's a great pleasure once again to be here to join Gul Law Chambers function today. I was there last year as well, और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि आज फिर एक दफ़ा गुल लॉ चैम्बर्स वालों ने इतना खूबसूरत फंक्शन यहाँ अरेंज किया है, और जो वो काम कर रहे हैं, कम्युनिटी की खिदमत कर रहे हैं, और जिस तरह वो डिलीवर कर रहे हैं, वी आर रियली प्राउड ऑफ गुल लॉ चैम्बर्स, और हमारी दुआएं उनके साथ हैं। और जो चंद सालों में उन्होंने तरक्की की है, वो उनकी जो कमिटमेंट है, डेडिकेशन है, और अपने काम से जो लगन और प्यार है, और जिस मोहब्बत और दिल लगी से वो काम करते हैं, ये आज उसका समर है कि वो दिन रात
दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं, और हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको और ज़्यादा तरक्की अता करे और ऐसे वो फंक्शन करते रहें। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। गुल लॉ फर्म है, उसके लिए आए हैं। ये एक अपकमिंग और मर्जिंग लॉ फर्म है और हमें उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी पाकिस्तानी और यहाँ पे जो माइग्रेंट के मसाइल हैं उनको खुशसलूकी से हल करेंगे। इनके एनुअल डिनर पे मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की शाम हम तिलावत से आगाज़ करना चाहेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इसके बाद मैं तारुफ कराना चाहूँगी आज के हमारे ऑर्गेनाइज़र का, लेकिन इससे पहले कि मैं उनको स्टेज पर दावत दूं, मैंने उनका थोड़ा सा इंट्रो रेडी किया है और वो मैं चाहूँगी कि मैं पेश करूं। सो Mr. Riaz Gul is the principal solicitor of Gul Law Chambers. He was admitted as a solicitor of Supreme Court of England and Wales and a member of the Law Society. Mr. Riaz Gul is a barrister at law and a member of the Honourable Lincoln's in London. Mr. Gul is also an advocate of the High Court and a member of the Punjab Bar Council, Pakistan. Mr. Gul is a UK immigration specialist. He was also awarded for Immigration Solicitor of the Year, International Legal Conference of the Year 2015, and also he was awarded for the Pakistan Achievement Awards for Excellence in Community Services 2013 and Entrepreneur of the Year 2014. So ladies and gentlemen, please put your hands together for Mr. Riaz Gul. Bismillahirrahmanirrahim. My dear friends, my family, my colleagues, and distinguished guests, I do a very warm welcome and thankful to all of you. Today we are celebrating our 5th annual dinner. I'm really much appreciate and it's a pleasure for your presence and for your participation. No doubt today is big day and big eve, and especially with the distinguished guests and the personalities make this eve beautiful as well. We just doing the annual dinner every year. The motive was solely and entirely just to say thanks to all my friends, my colleagues, my guiders, especially the people who are guide us for our professional. At the same time, we also make a promise and do the aim to make our services better and to provide better opportunities. So I much appreciate for all of community, special our future MP and the candidate for the Member of Parliament, Seema Malhotra. हमारे साथ हैं, इनका शुक्रिया. At the same time, Ruth Cadbury, she is also the Member of the Parliament, going to be candidate. Much appreciate Ms. Ruth, you came here. मीडिया से बात की जाए तो हम लोग यहाँ पे इफ्तिखार कैसे साहब बैठे हैं, जियो टीवी की तरफ से आए. इफ्तिखार साहब आपका शुक्रिया. गुल लॉ चैम्बर और वीनस टीवी का साथ हम हमेशा लीगल एडवाइस करते हैं ऑन वीनस टीवी डे एवरी वीक. मिस्टर एंड मिसेस ताहर चौधरी साहब, आपकी आमद का शुक्रिया. गुल लॉ चैम्बर की तरफ से अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट के लिए बदलते हुए कवानीन या कोई भी चेंजेस आ रही हों उसके बारे में क्वेश्चंस आंसर हम अपने न्यूज़पेपर लिखते हैं. उसमें यूके टाइम्स, नवाए जंग, यहाँ पे हक साहब बैठे हैं, उनके आने का शुक्रिया. आज के प्रोग्राम को तरतीब करने के लिए बहुत सपोर्ट किया
राणा खलील साहब ने, जो कि एग्जेक्टिव हैं PTV ग्लोबल के, उनका बहुत शुक्रिया। इस तरीके से तमाम जो काउंसलर्स हंजलो से आए हैं उनके आने का शुक्रिया। एंड फ्यूचर में इंशाल्लाह आई विश एंड आई बिलीव कि निसार मलिक साहब गोइंग टू बी आवर मेयर ऑन हंजलो, वो भी आए हैं, उनका बहुत शुक्रिया। हमारा जो ये मकसद सिर्फ़ और सिर्फ दोस्तों को या हमारे क्लाइंट्स को या हमारे दोस्त जो भी हमारी कम्युनिटी है उनको ये थैंक यू बोलना और साथ ही इस बात का प्रॉमिस करना कि हम नेक्स्ट ईयर में अपनी प्रोफेशन को, अपनी सर्विसेज को बेटर करेंगे विद द सपोर्ट ऑफ आवर काउंसल्स, जो हमारे बैरिस्टर्स हैं या जो भी हमारे कम्युनिटी के लोग हैं। हमें कोई पॉजिटिव अगर कोई एडवाइस करते हैं, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी फॉलो देयर इंस्ट्रक्शंस। एट द सेम टाइम्स हमारे हंजलो जामे मॉस्क की तरफ से तमाम ट्रस्टीज़, चेयरमैन साहब, जनरल सेक्रेटरी मजीद साहब, बाकी दोस्त बैठे हैं, उनका बहुत शुक्रिया। हिसाम सिकंदर साहब कैनफर्ड मॉस्क के बड़े बानी हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो भी तशरीफ़ लाए हैं, उनका बहुत शुक्रिया। तमाम कम्युनिटी से यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, इसलिए सिर्फ मुख्तसरन क्योंकि 2 मिनट का मुझे कहा गया, 2 बातें वेलकम एंड थैंक्स, सो आई एम जस्ट फॉर द इंस्ट्रक्शन के मैं सिर्फ थैंक यू बोलूँ। साथ ही साथ जो यहाँ शाहद यूनुस साहब रेडिंग से काउंसलर हैं, मेरे दोस्त मेयर ऑफ लेस्टर शिबी असलम साहब, वो आए, उनका शुक्रिया। बहुत सारे दोस्त हमारे एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ दोस्त ईरान से हनी भाई साहब यहाँ बैठे हैं, हनी साहब आपके आने का बहुत शुक्रिया। अगेन ये इस बात का अहद है कि आप तमाम दोस्तों को हमारी सर्विसेज या हम पे कॉन्फिडेंस है कि आप लोग हमारे हमेशा एनुअल डे पे साथ देते हैं, आप आते हैं, हमारे साथ सपोर्ट करते हैं। और अगेन एंड अगेन these are the services we are trying our best to every day to just build up to more to enhance our knowledge and to make a better way, but always we just can follow your guidance if in a positive way. इनके साथ साथ मेरी फैमिली, मेरे बच्चे और तमाम दोस्त, मेरे कोलीग स्पेशल गुल लॉ चैम्बर के तमाम स्टाफ जो मेरे साथ पूरी मेहनत कर रहे हैं। ये जो अवार्ड्स का नाम लिया गया, बी वेरी ऑनेस्टली इज़ नथिंग अनटिल ऑल द सपोर्ट फ्रॉम माई स्टाफ, जो तमाम मेरे गुल लॉ चैम्बर के तमाम स्टाफ के लिए ये चीज़ें हैं कि आप उनके मेरे साथ काम करते हैं और उसके बाद हमारी जो कम्युनिटी है उसको एक्नॉलेज करती है। ये एक सबसे बड़ा थैंक्स है फ्रॉम द ऑल कम्युनिटी। अगेन तमाम दोस्तों का जिनका मैं नाम ना ले सका उनका भी सबसे चौधरी शफीक साहब सलाव से मेयर हैं हमारे, वो तमाम अपने दोस्तों के साथ यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, उनका भी शुक्रिया। सलाव के जो हंजलों के तमाम मेंबर्स हैं, जो काउंसलर्स हैं, उनका शुक्रिया। लेकिन अगेन आपकी गाइडेंस से हम लोग और इम्प्रूव करेंगे। और अगेन जो इस वक्त मेरी बेस्ट विशेज़ हैं, इस स्पेशल फॉर द इलेक्शन इज़ हैपनिंग नेक्स्ट मंथ for Seema Malhotra and for Ruth. I wish her good luck and I believe we will support you in all means, in all manners. Wherever you call, we are with you, our community is with you as well. And the same time is congratulations to Nisar Malik Saab, he is going to be a mayor in Hounslow. Definitely हमारा वहाँ पे ऑफिस है, हमें विश करना पड़ेगा। तो तमाम दोस्तों का शुक्रिया, much appreciate and enjoy the film. Thank you so much, Riaz. Next, I would like to just give a little bit intro about the company. So I have got a small, very, very small, so I'm not going to make you people bored, you know. So this is the reason we made very short and sweet messages and simple speeches, you know. Gul Law Chambers was established in April 2010. And today we are celebrating here the 5th successful annual dinner of Gul Law Chambers. The firm has since grown exponentially, where it now holds Law Society accreditations with Lexel and Conveyancing quality scheme, which is known as CQS as well, which recognize the firm by the Law Society to be operating at the highest standards in the United Kingdom. Gul Law Chambers solicitors now provide services at the firm in immigration law, business visas, sole representatives for overseas companies, work visas, which is known as work permits as well. Other services are family law, personal injury claims, residential conveyancing, commercial conveyancing, and crime. Expert staff have been employed to help clients with whatever service they require. Only the highest level of services provided with this firm's reputation continuing to grow.
Throughout the existence of Gull Law Chambers, the firm has been shortlisted for the Law Society Awards 2014 for excellence in practice management. So, well, this was a small intro of the company. Now, next, I would like to call upon the stage. She is a female law firm society accessor, consultant for the Lexel accreditation for the Law Society. So, ladies and gentlemen, put your hands together for Jenna Garland. Thank you very much. There's a bit of pressure on me. The lady just said it's going to be short and sweet speech. I know it's dinner time, so I'm going to try my best to do it short, sweet speech. But before I do that, I just wanted to ask a question. Has anybody of you read the famous book called The Outliers? It's called The Outliers by Malcolm Gladwell. There's a lady who's read it. Anybody else? Here, on the left-hand side. Oh, there is. Yeah, so there's a few of us who've read the book. It's called The Outliers by Malcolm Gladwell. The book, as we were driving here today, I was asking my husband, oh my gosh, they asked me to do a speech. What am I going to say? And he says, well, just bloody tell them what you know about them. So I said, well, actually, this company reminds me of this book that I've read called The Outliers. The book is called The Story of Success. And I met Riaz in 2011. They were then a very small law firm. They were based in a small office sharing with other businesses. And somebody gave me a phone call and said, would you be able to help us to obtain Lexel, which, as the lady said, is the Law Society's accreditation scheme. What it means when you have a Lexel accreditation is that, you know, when you put water on top of, or you mix water and oil, do you know what happens to the oil? They rise up, yes, that's right. So the oil always rises up. And that's what Lexel is in terms of legal profession. Those who rise up are those who are Lexel accredited, because they have to go through a process where somebody goes like me. I am nice and sweet today because I'm not doing a nice and sweet speech. But it's a very, very rigorous accreditation where somebody like myself and another assessor would go in and examine with excruciating detail how they are acting, how they are delivering the legal services to their clients. Are they doing their best for their clients? Are they managing the risk in their firm? Are they bloody good? That's what Lexel is. And if you can pass that accreditation, you are then given this mark of excellence. And so when I was asked to first act for Riaz, I was wondering, because normally the law firms that I assist are firms who are already about 100 years old. At the moment, I am acting for a law firm who are 250 years old. And they are having an excruciating amount of difficulty passing it because it's a hard accreditation. Whereas when I first met Riaz, which brings me back to the story of success, there are three things that I realized that are very, very distinct about Riaz and his team. One was, although they were so young when I first met them, when I actually tried to, not young as in young as a law firm, because normally I act for 100 years old law firms, and then this ones, they're 1 year old, I think, when I first met them, and they said, we would like to be Lexel accredited, and I've never had a client as young as that, and as small and at such humble beginnings as that. So I had my doubts. And then I said, oh well, what can I do? I live very nearby, I'm local, I'll give them a try.
And then one of the first key things that I realized was distinct about Riaz specifically was he had a very open mind. He's what I think he alluded to it today. He said he is looking and seeking always for guidance. And that in that book, in the story of success, is you know, we've read his CV. We know his CV. He's a barrister, he's a solicitor, he's this, that, and the other. But he struck me as somebody very humble. He said to me, the first thing he asked me when I met him first was, please, can you give us some guidance on how to do it as best as we can? And that is very striking for a lawyer of such high caliber. So that was the first thing I noticed. The second thing I noticed is he worked bloody hard to do everything he can for his clients. Actually, I had my doubts whether he would pass the accreditation, because I thought, well, do you actually sleep? Because, you know, at the time that we were doing their accreditation, he would be, I think he was studying for the bar, he was studying for criminal accreditation. And then I said to him, you know, Riaz, before I recommend you to have this accreditation, I have to get assurance that you will actually manage this risk. I said to him, the highest risk you have is actually yourself. You are not having sleep, you are not having any rest, you're not resting, how are you going to do service to your clients? And he took that on board, and he was very, very humble. He was looking for guidance. And the third thing is, I can see people saying, I thought she said short and sweet speech. So this is the third thing that I noticed. And I've just noticed it again. He wouldn't stop saying thank you. Have you noticed? He would say, I very much appreciate Gemma, I very much appreciate Gemma. And apparently, the story of success says you must be appreciative. For somebody who has got so much, he is very humble, he worked bloody hard to get he's very passionate to do the service to his clients, and he wouldn't stop saying thank you. Whenever he phones, and because I had to be in the law firm for a very long time, because every year we have to go and examine the way the firm is being managed. So before he says anything else, I very much appreciate Gemma. Thank you very much, Gemma. And I think that's one of the keys to success. And I think that's my cue. I've said the 3 good things. But before I do so, I just also wanted to reiterate that I was just chatting to the gentleman in the door, next to me earlier. Guy said, but what does this mean to have this Lexel accreditation? For somebody as a law firm that is as young as Gull Law for 5 years, and they had this accreditation since 2012, they were barely, if you were a baby, you were barely crawling, and you already have the Medal of Excellence. And there's not many law firms who have this. And then I was so impressed with them. I said to them, actually, you guys should have an award. Because he said to me, you know, why don't you just get on with the business? And he said, no, I want to get this award straight away. I want to get this accreditation straight away because I want to do it right first time. And then I said to them, I think you guys ought to have an award from the Law Society for excellence. And they were, although they were shortlisted for the Law Society's Practice Management Excellence Award. And I know you probably think, well, that's not a big deal. Well, actually, that is a massive big deal. Because it's a little bit like when I saw their name, any one of you, we have in the legal industry there's a magic circle and there's a silver circle. The magic circle are law firms like, you know, Clifford Chance with 50 billion profits, those kind of stuff. And then you've got the silver circle who are, you know, the massive, massive law firms, the Goliaths of the industry. And yet, guess whose name is next to Clifford Chance in the Law Society shortlisted law firms? You then see Gull Law Chambers from good old Hounslow,
and they were shortlisted. I think we should give him a hand. Thank you very much. Thanks a lot, Gemma. I think I'm just following the footsteps as well, thanking you all the time, and every gentleman and every ladies over here. But thanks a lot. Well, let me tell a little bit more about Riaz. रिश्वत नहीं दी हुई मुझे वैसे तो. Mr. Riaz Gul is also writing articles in Urdu newspapers, Nawai Jam, UK Times and English newspaper Asian Mirror. हमारे साथ इस वक्त मीडिया वाले भी सारे बैठे हैं और Mr. Gul does TV shows on different TV channels. One of his most famous one is interactive law show, which is UK Law with Riaz Gul on Venus TV. और उसके बाद he's on and off with the Geo as well. लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा उल्टा करने जा रही हूँ कि rather than आप लोग स्टेज पे आए, मैं आपके पास आना चाहूँगी और थोड़ा सा पूछना चाहूँगी आपसे. Gul, I've seen over the last few years, has done TV show on Venus TV, he's worked very hard, very well organized, and I'd like to wish him all the best, and I congratulate him on his 5th anniversary. Yay, thank you so much. ठीक है, आपसे चीफ एडिटर आप यूके टाइम्स के हैं, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप यूके इतनी माजरत तो मेरी बनती है ना, आपकी तरफ चलो ये था. Please, I want you to say a few words, please. जी कोई शक नहीं है इसमें. सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा रियाज गुल साहब का, उन्होंने इनवाइट किया, इज़्ज़त दी. इसमें कोई शक नहीं है कि रियाज गुल साहब और गुल लॉ चैम्बर जो है वो इस वक्त कम्युनिटी को, क्योंकि इस वक्त इमिग्रेशन जो है वो हमारी कम्युनिटी और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी कम्युनिटी में एक अहम तरीन मसला है. मैं ये तो नहीं कहूँगा कि टॉप ऑफ दी या मेन जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उसमें ओबियसली है ही है. इमिग्रेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी कम्युनिटी में, उनको हल करने के लिए जिस तरह रियाज गुल साहब जो है वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, वो यकीनन काबिल तहसीन है. हम खराज तहसीन पेश करते हैं. और ख़ास तौर पर देखें जिस तरह कुछ लोग होते हैं जो सोलिसिटर्स की फ़ीस वगैरह जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते. मुझे इनकी एक बात अच्छी ये लगती है कि फ्री एडवाइस देना और मुख्तलिफ जगहों पर जाकर गेट टुगेदर्स करना और कम्युनिटी को इकट्ठा करना. चूँकि मैं देखता रहता हूँ इनके डिफरेंट कम्युनिटी सेंटर्स और मॉस्क वगैरह में जो गेट टुगेदर करके ये प्रोग्राम वगैरह करते हैं, तो वहाँ पर लोगों को इकट्ठा करके उनको फ्री एडवाइस देना. और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे एशियंस में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स या कुछ ऐसी फैमिलीज़ भी आ जाती हैं जिनको प्रॉब्लम होती है और ये बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम है. तो अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो जिस तरह मैं समझता हूँ कि रियाज साहब कर रहे हैं, और इसके डेफिनेटली जो फैमिलीज़ आके हमें इनको ब्लेसिंग्स देती हैं, तो हमें बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि हम जो है वो रियाज भाई के साथ मिलकर कम्युनिटी की खिदमत भी कर रहे हैं. रियाज साहब हमारे दोस्तों में भी शामिल होते हैं. तो मैं आखिर में रियाज साहब आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपकी पूरी टीम को, और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको भरपूर कामयाबी अता फरमाएगा. Thank you so much, Hassan. तो बारा रियाज गुल साहब हमारे बहुत अच्छे एक नए और नौजवान कानूनदान हैं जो हमारी कम्युनिटी में बहुत अच्छा इजाफा है. और उन्होंने यहाँ पे कुछ ही अर्सा पहले प्रैक्टिस शुरू की और फिर वो बैरिस्टर भी बने. साथ साथ उन्होंने, जैसे सब हमारी इमिग्रेंट्स की एक स्टोरी है, साथ साथ हम मेहनत करते हैं. इस पर मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ. और जितनी तेज़ी से वो आगे जा रहे हैं, उम्मीद है ऐसे ही वो मेहनत करते रहेंगे और ऐसे ही वो कामयाबी हासिल करेंगे. और मैंने उनके जो क्लाइंट्स हैं, मैंने ये देखा है और सुना है कि उनके क्लाइंट्स हमेशा उनसे खुश हुए हैं, ताकि वो सातों दिन रात दिन अपने क्लाइंट्स को अवेलेबल हैं और उनकी अपनी तरफ से और अपनी पूरी टीम के साथ उनकी खिदमत करने की, उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं, जिसकी कि हमारी कम्युनिटी को ज़रूरत होती है. मैं फिर रियाज गुल साहब को उनकी कामयाबी पे और चाहता हूँ कि अगला साल जो है वो उनके लिए इससे भी ज़्यादा मुबारक साबित हो.
Thank you. Well, next I have Labour's candidate for Brentford and Isleworth constituency for the 2015 general elections. Please, ladies and gentlemen, put your hands together for Ruth Cadbury. Thank you. And I'm absolutely delighted to be here again for Riaz Gul's anniversary dinner. I'm so pleased to see the success of Gul Law Chambers, and it's really gratifying to know that there are good quality companies such as Gul Law Chambers. In fact, it's really good to know that Gul Law Chambers is in Hounslow, so that we know that we have a reliable, good quality law firm that serves the businesses, serves the community, and serves the residents locally, so that we know that there is a trustworthy firm. There is so much that can go wrong, and the areas in which Gul Law Chambers works is so important to so many people in how they live their lives, travel, work in business, set up business, and do business. And it's really, I'm so pleased, and Gemma's speech was really reassuring, and I'm so proud to be associated with Gul Law Chambers, and I congratulate you on the success of the first 5 years, and I wish you success for many, many years to come. Thank you very much. Thanks a lot, Ruth. Next, I would like to call upon candidate for general election from Labour Party. Please, I welcome Seema Malhotra on the stage, please, to come and say a few words. Thank you. Thank you very much, Mr. Mayor, Mr. Riaz Gul, and all your family and your workers. We have also here our future Mayor for Hounslow, Nisar Malik, our Deputy Leader Amrit Maan, other councillors, and all distinguished guests. Assalamu alaikum. I want to thank you all for coming this evening as well, and I'm so honoured to be here for this 5th anniversary dinner, and to be here to celebrate and share in the success of Gul Law Chambers, and to be here with representatives from across many communities that have been affected by that success and be part of that growth story, to have also the Hounslow mosques here represented, and also so many in the media, I think is a true indication of how the story of your success, Mr. Gul, in your work is not just a story of your own personal success, it's a story of a business success, and it's a story of a community success. And what I believe through the story that Gemma has told, which I think was incredibly enlightening as well as very moving about your progress, and indeed the uniqueness of that progress, gives us extra pride in the work that you have done. And I'm incredibly proud also to be associated with Gul Law Chambers, that it's in Hounslow, that it's with my constituency, and it's actually serving so many of our local residents. And I just want to say this one thing tonight, that we believe very much in the importance of recognising and valuing diversity in Britain. It's incredibly important that everybody has a chance to succeed and to get on. That's part of the politics that drives and inspires us to make sure that there are not barriers in the way of progress, and that those who want to come forward have every opportunity to develop and further their talent. And also, I think what is shown through the story of Riaz Gul's success is that word humility that Gemma used so well, the recognizing that yesterday's success is not a guarantee of success tomorrow, and that continuing to innovate, to learn, to appreciate how the market changes, to appreciate how your customers' needs change, and be following the needs of those customers is incredibly important. And I have absolutely no doubt that Gul Law Chambers is going to continue to grow. It's going to continue to grow in Hounslow. It's going to spread its wings further than that. It's going to do us proud wherever it goes. And it's going to be a story of success that is going to give us all, I think, our own humility,
about how somebody has grown and developed, has shared in their success with the whole community that we are seeing year by year. And that service goes on to improve not only their lives, but also become a role model for others in the generations to come. Thank you very much for inviting me, and I wish you all a very, very happy evening. Thank you so much, Seema. Next, I would like to call upon, I would not give any introduction, I would just like to, मैं उर्दू में कहना चाहूँगी, निसार मलिक साहब, मैं दावत देना चाहूँगी आपको स्टेज पर, प्लीज़ आकर कुछ अल्फाज आकर पेश कीजिए. निसार मलिक. Assalamu alaikum. Good evening to everyone. And I think a lot of the things have actually already been said. And all I can say is really, really grateful for the invitation, for getting the people together, and particularly I think the work which Riaz does is actually not purely financial side, but at the same time the voluntary sector, that he is there to help. Even somebody can't afford it. I think that is a great, great thing to do, and I'm really grateful that he's actually invited all of us to be together, to share his success. And I can say that nobody is successful unless they have the right people, they have the right friends, they have the right support. And as far as my mayorship is concerned, I would say my sincere thanks to my friends, people like Amrit Maan, Mr. Nagra, and Mr. Amrik Maan, and other councillors who voted for me to be mayor in May 2015. So it is honor, and it is beautiful to have a success, and I wish him particularly, he's actually come from the same city as where I grew up as a child, so it gives me even more special pleasure to actually join him, and I wish him the very best, and all my thanks to the whole community to work with him to make him more successful. Thank you. और तालियां बजा रहे हैं, अरे वाह, बजानी भी चाहिए. इसी के साथ चलूंगी, हम लोग will have a dinner now. I think everybody must be hungry. सबको भूख लगी होगी, और इसके बाद ही हम अपनी म्यूजिक की तरफ चलेंगे, और फिर धड़ाधड़ शाम हमारी चलेगी. So ladies and gentlemen, the dinner will be served. Please give a big, huge round of applause to Riaz Gul and Gullah Chambers. यहाँ पे राणा साहब और दूसरे राणा साहब इफ्तिखार भाई, आपकी नजर है. Thank you very much. यहाँ पे मेरे बहुत मोहतरम सब लोग, आप सभी मेरे मोहतरम हैं, और जनाब हनीफ साहब यहाँ पे बैठे हैं, और अली दबंग साहब.
शाह साहब, उनके बेटे पी नसीरुद्दीन नसीर, उनकी एक लिखी हुई गज़ल, और क्योंकि इफ्तिखार भाई खुद बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, और मैं उनकी नज़र करता हूँ। आप इस तरह तो होश उड़ाया ना कीजिए, यूं बन